अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। You are quite familiar with the word cell, a basic unit of life. By the middle of the 19th century, biologists had formulated cell theory, which is a fundamental concept in biology. The general accepted portions of the modern cell theory are as follows. ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में हम सेल का जो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सबको पता है कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, by the middle of 19th century, biologists had formed cell theory. Okay, and the basic concepts of cell theory are: the cell is a fundamental unit of structure and function in living things. All living organisms are made up of one or more cells, and cells arise from other cells through cellular division. So cell theory, उसके जो तीन मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। दूसरा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, एंड जो सेल्स होते हैं वो अदर सेल्स से बनते हैं फ्रॉम सेल डिवीजन। This chapter will help you to become familiar with the structure of cells and how they work and the basic techniques essential for cell study. So first topic है हमारे पास techniques used in cell biology. To know the structure and function of cell and cell organelles, some of the techniques will be discussed here in brief. Okay students, के सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं और उसमें से कुछ टेक्निक्स को हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन। Cell fractionation is the combination of various methods used to separate a cell organelle and components based on size and density. It is very useful for electron microscopy of cell components. The principle of cell fractionation consists of two steps: homogenization and centrifugation. So students, simply cell fractionation क्या है कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऑर्गेनेलीज है, मिक्सचर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज हैं, तो अगर उनको हमने सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे कि उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल्फ फ्रैक्शनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी, क्योंकि सबका जो साइज और डेंसिटी है वो डिफरेंट होगा, तो उसकी बेस पे वो सेपरेट हो जाएगा। और इसके दो स्टेप्स हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन के। फर्स्ट वन इज होमोजेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। So what is homogenization? It is the formation of homogeneous mass of cells. It involves the grinding of cells in a suitable medium with correct pH, ionic composition and temperature. In plants, enzyme pectinase is added to digest middle lamella. This can be done in a blender. This procedure gives rise to a uniform mixture of cells which is then centrifugal. Okay, so first step जो हमारे पास सेल्फ एक्सटेंशन का है कि वो हमने क्या बनाना है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सेल्स लेना है। ठीक है, तो सिंपली वो कह रहा है कि हम एक एंजाइम जो है पेक्टिनेज वो भी यूज़ कर सकते हैं टू डाइजेस्ट मिडल लैमेला ऑफ लीव्स, एंड उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिक्सचर ऑफ सेल्स आ जाएगा जिसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि सिंपली सब्सटेंसेस को सेपरेट करना ऑन द बेस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी under the effect of centrifugal force. It is done by the machine called centrifuge. This machine can spin the tubes at very high speed. Spinning the tubes exerts a centrifugal force on the contents. There are two major ways of centrifugation. So स्टूडेंट, सिंपली हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो भी मिक्सचर है सेल्स का, अगर उसको हम ट्यूब में ले लें और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन से क्या करें, सेंट्रीफ्यूज कर ले, यानी उसको वो क्या करेगी, बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि जितने भी कंटेंट्स है उसके सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देयर आर टू मेजर वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, के भी टू टाइप्स हैं: डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। In density gradient centrifugation, the cell components of different sizes and densities are separated in different layers. The upper layers are less dense than lower layers. Okay, सिंपली क्या है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में कहता है कि हमारे पास जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी इन डिफरेंट लेयर्स, एंड जो अपर लेयर्स होती हैं वो लेस डेंस होती हैं देन लोअर लेयर्स। इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, the size and shape of particle determines how fast it settles. A series of increasing speeds can be used. At each step, the content which settles in the bottom
are called pellet, and those that remain suspended in the form of liquid is called supernatant. After each speed, the supernatant can be drawn off and centrifuged again. A series of pellets containing cell organisms of smaller and smaller size can therefore be obtained. So simply students, differential centrifugation में क्या होता है कि जब हम स्पिन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि कुछ ऑर्गेनेलिस जो एक नीचे लेयर बना लेती है, जो सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम पैलेट कहेंगे, और बाकी जो ऊपर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बचेगा उसको सुपर नाइट्रेट कहते हैं। तो कहता है कि हम सुपर नाइट्रेट को कलेक्ट कर लेंगे और उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इस तरह हमारे पास जो नीचे डिफरेंट पैलेट्स आते जाएंगे उनको हम ऑब्टेन कर लेंगे, और उसमें क्या होगा, हर पैलेट जो होगा उसमें इक्वल साइज की क्या होंगे, ऑर्गेनेलिस होंगी। सो नेक्स्ट टेक्निक है जो हमारे पास वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। Most biological structures are transparent. In order to differentiate between structure, various color dyes are applied. Okay. स्टेन मीन्स यानी डाई या कलर करना, कह रहा है कि जितने भी बायोलॉजिकल मोस्टली स्ट्रक्चर्स है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इन उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम वेरियस कलर्स को यूज करते हैं या डाइस को अप्लाई करते हैं। सच टेक्निक्स आर कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक्स व्हेन ओनली वन स्टेन सच एज बोरक्स कैरमाइन is used, it is called single staining. Okay, अगर हम एक ही stain यूज करें तो हम उसको single staining कहेंगे। When two stains, when that will stain nucleus, e.g. hemotoxylene, and other that will stain cytoplasm, e.g. eosine, are used, the process is called double staining or differential staining. नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन रेफर्स टू वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू असिस्ट इन डाइसेक्शन। माइक्रो मींस होता है स्मॉल डाइसेक्शन टू कट ऑफ। तो अब हमको कह रहा है कि माइक्रो डाइसेक्शन उस टेक्निक का है कि जिसमें हम माइक्रोस्कोप यूज करके डाइसेक्शन करते हैं। इट इज डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रेन्यूल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू और सेल्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल्स। इन दिस टेक्निक the image is seen in a large TV screen or monitor while dissecting. So next technique is tissue culture. Growth of a cell or tissue on chemically defined neutral medium under sterile condition is called tissue culture. Okay, simply tissue culture. Culture होता है mean to grow. तो अब tissue culture क्या है कि हमने किसी सेल या टिश्यू को ग्रो कराएं on a chemically defined medium पे, ठीक है, under sterile, उसको हम कहेंगे tissue culture. This technique can be applied for both plants and animals. Plant tissue culturing is mainly used for plant cloning. For example, production of genetically identical plants. Animal tissue culture is usually set up by growing individual cells to form a single layer of cells over the surface of a glass container. Animal tissue cultures are used to see any abnormality in the cell, e.g. cancer, chromosomal disorder, etc. Next technique is chromatography. Chromatography is a technique which is used to separate chemical compounds from a mixture. It is generally used for the separation of mixtures of proteins used to separate different chemical compounds from a mixture. It is generally used for the separation of mixtures of protein, amino acid, or photosynthetic pigments. There are two types of chromatographic techniques. Paper chromatography is a simple and most widely used technique. It involves two phases. Stationary phase, which is cellulose filter paper, and mobile phase is solvent in which sample mixture is dissolved. When the solvent travels over the paper, the mixture sample begins to separate as dots at different places on paper according to their affinity. This paper is called chromatogram. ये फिगर 1.3 देखें, ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है। ये फिगर 1.3 में देखिए, ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है। इसमें ये देखिए, ये टॉप पे हमारे पास लिड है, ये पेपर है, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है। तो और ये जो आपको डार्ट्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, ये क्या है, ये जो मिक्सचर है वो हमारे पास जो कंटेंट्स थे वो सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। It is a technique which is used to separate fragments of charge-bearing polymer according to their size, shape, molecular weight, and surface charge. Such charge-bearing polymer molecules are DNA, RNA, protein. इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एक चार्ज बेरिंग जो पॉलीमर मॉलिक्यूल है उसको फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप और मॉलिक्यूलर वेट। दिस टेक्निक यूटिलाइज अ जेल मीडियम फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट व्हिच इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या हम एक जेल मीडियम यूज करते हैं और
जो कि फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेगी ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Often the gel is sandwiched between glass or plastic plates to form a viscous slab. The two ends of these slabs are suspended in two salt solutions that are connected by electrodes to a power source. At one end of the slab, the samples are loaded. When voltage is applied to the apparatus, the molecules present in the gel migrate through the electric field. The negative charge molecule will move towards the positive pole, and the molecule having positive charge will move towards the negative pole. The velocity of the movement of fragments is inversely proportional to the size. Therefore, smaller fragments move faster than larger. In this way, all the fragments are separated in the gel after some time. Later on, the molecules can be pinpointed by staining the gel. Students, as you can see in figure 1.4, gel electrophoresis. So there is an electrode, glass tube or plates containing gel, and there is a power supply to which electrodes are connected. So next technique है हमारे पास spectrophotometry is a technique which is used to determine the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound or a photosynthetic pigment. Okay, ये technique है जिसमें हम amount of absorption of different wavelength of light measure कर सकते हैं by different chemical compounds. For this purpose, the instrument used is spectrophotometer. The amount of light absorbed at each wavelength is plotted in a graph called the absorption spectrum. Spectrophotometry can be used to determine the wavelengths of light that take part in photosynthesis. It can also be used to determine the very minute quantity of a substance such as DNA in a sample. Next technique is resolution and magnification in microscopy. The minimal capacity of a lens to differentiate between two adjacent points is called resolution. The resolution of naked eye is 0.1 millimeter. This resolution can be increased by increasing magnification. The magnification is the capacity of an optical instrument to increase the size of object than its original size. The objects which cannot be seen by naked eye can also be observed by increasing magnification. Different lenses have different magnification power which are represented by letter X, that means the number of times than original size. Therefore, a lens of 10x magnification power can increase the size of object of 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर यानी 10 टाइम्स उसको इनलार्ज कर देगा. जैसे फिगर 1.7 और 1.8 में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल दिया हुआ है. Microscopy is the techniques used in to view objects that cannot be seen by naked eye. The range can be anything between millimeter and nanometer. Most animal cells and plant cells are between 10 micrometer and 30 micrometer. A common compound microscope consists of ocular lens and objective lens. The overall magnification power of such a microscope is equal to the product of magnification power of both lenses. The resolving power of light microscope is 250 nanometer and its magnification is up to 4000 x. The resolving power of electron microscope is 0.2 nanometer and its magnification is up to 20 lakh x. Next technique is micrometry. Micrometry is the measurement of the size of objects under microscope. Okay, इसमें क्या करते हैं कि हम size of objects को measure करते हैं under microscope. It involves two micrometers, the ocular micrometer and a stage micrometer. The ocular micrometer is a glass disc with 100 equal divisions with no absolute value. It is placed in the eyepiece or microscope. Then it is calibrated by using a stage micrometer. This is a glass slide with an exact scale like a miniature transparent ruler. By superimposing the images of the ocular micrometer and stage micrometer scale, it is calibrated so the size of any given object viewed under the microscope can be estimated. As you can see in figure 1.9 ocular micrometer, it has a disc plate and a scale with 100 visions. So students, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको ये सारी टेक्निक समझ आ गई होंगी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.